So, namaste to all. Ma'am, are you ready? Yes, sir. Fine, great. So, once again, namaste to all. As you know that Central Sahaja School Conclave Kottayam and Council of CBSE Schools of Kerala organizing webinar series phase 2 for secondary and senior secondary teachers. Today, we have our resource person, Srimati Leda E.T., TGT Hindi, Chinmaya Vidyalaya Thrissur. Let me welcome today's resource person for the session. Welcome, ma'am. Thank you, sir. Central Sahodaya Conclave Kottayam and Council of CBSE Schools of Kerala jointly organizing many online and offline training. Phase 2 is focusing on decoding sample question paper and highlighting board examination point of view. As you know that Central Board of Secondary Education already informed this year's board examination, which will be commenced on February 15th onwards. So today, November 9th, February 15th, few days remaining for the teachers. The final lab, you are in the final lab, and our students are in the final lab. So we wish this session should be more interactive and more informative one. Dear participants, you can feel to interact with the resource person through chat box. Anytime, any clarification, you can feel to communicate with the resource person. And in the end of the session, there will be a question answer session also, Q&A session. Any doubt, any clarification, you can unmute and ask that time also. During the session, kindly use the chat box. End of the session, please unmute and ask your doubts. That is the procedure we are following last couple of days webinars. Central Sahodaya Conclave Kottayam is a registered Sahodaya. So we are offering e-certificate for the participants. We are offering e-certificate for the participants, and for the e-certificate, we are charging ₹100. During the session, we are posting one e-certificate Google Zoom link, Google link to Zoom chat box. You can fill the Google form and pay the amount. Then you can avail the e-certificate. It's a registered Sahodaya. This certificate can be used for the continuous CDP, continuous development program for the teachers, the 50 hours mandatory training. You can use this certificate. So for the certification, you have to pay ₹100. That is and fill the Google form. That is the information we want to share with you. And dear participants, as you know that Central Sahodaya Conclave Kottayam, our team leaders, patrons, our Honorable President, Ms. Marina Sebastian, Principal, Life Ali International School, Pudupalli, and our Honorable Secretary, Srimati Vinita G. Nair, Principal, Alpine Public School, Kanjirapalli, Kottayam, our Honorable Treasurer, Mr. M. Neelakandan, Manager, Sri Shankara Vidyalaya, Vaikam, Kottayam, and all the patrons and team leaders of Council of CBSE Schools of Kerala, CSCK 2. So my sincere thanks and regards to the patrons and team leaders and our technical partner. The technical platform and our technical partner is Insight E. Insight E is a service provider for the educational institutions. They are providing holistic progress card, accreditation details, and ERP software, teachers assessment, many areas related to the school field. So representing Insight E today with us, the Managing Director of Insight E, Mr. Shuhaib. Welcome, Shuhaib, for the session, and thank you all the support. Thank you, Ranjit sir. Fine. So now you, the participants. I already informed that I wish this session will be a more interactive and energetic one. You can feel to communicate with the resource person. I wish this session will be a wonderful learning experience for you. And the resource person, Leda ma'am, congratulations and special thanks to you. Whenever we are asking for a session, you are always say that, yes, sir, I am ready to do. Our sincere thanks and acknowledgement for entire Chinmaya family,
your team leader, principal, all the persons behind to support us for the session. Thank you. And now the session is open for you, man. You can start the session. Thank you, sir. Thank you so much. My extreme gratitude to Central Sahodaya Conclave, Kottayam and CCSK for providing me a chance to interact with the teachers, 10th standard teachers, who are preparing their children for the forthcoming board examination. This is the third time I am sharing the platform of Central Sahodaya Conclave, Kottayam. I really appreciate the efforts taken by the Sahodaya team for updating the teachers, which is the need of the hour. As we all know, only a lit lamp can light a lamp. So my thanks to Central Sahodaya Conclave, Kottayam. My special thanks to Team Insight E for providing the technical support. A warm good evening to each and everyone present here. Good evening to all. Now let me start sharing my screen. Is it visible? Yes, ma'am. It's visible. Please put for the slideshow mode, ma'am. Okay, sir. Okay. Yeah, great. It's visible, ma'am. So now, the learning outcome of today's training program, as we all know, we have 1 hour with us, and at the end, we are going to learn all these things, discuss all these things. First, we will discuss the curriculum of 2023, which all of you, almost everybody has gone through it, and all of you know it. Even then, we will go through that. Then the main important thing is analysis of sample question paper, which was released by CBSE recently. I think almost every teacher might have gone through the question paper. Then we will discuss about the marking scheme and about the internal assessment, how the 20 marks are divided. We will discuss these 4 points today. Okay. Now, before that, let me ask you one thing. Did you all see the sample question paper, teachers? Have you all gone through the sample question paper? Ma'am. Yes. How do you feel? Is it a very easy question paper? No, ma'am. No. No, ma'am. It's medium. Is it an easy question paper? No. No. Is it a tough question paper? No. No. Is it a very tough question paper? No. No. Then in which category does it come? Little tough and little more easy. Medium. It's a balanced question paper. Are you saying as a teacher or as a student? As a teacher. As a teacher. For us, it is an easy question. Okay, question paper. In the point of view of a student, how do you feel? For students, not that much easy, ma'am. Why? Why do we feel like that? It's not very easy for the students. Is it the problem of the question paper? Not the problem of it's the multiple choice is more added, not so little confusion, ma'am. More competency based for grammar, ma'am. For grammar. Grammar part is very easy, isn't it? Yes. No. Yes. Comprehension passage, unseen comprehension passage is difficult for them. So okay, but the question paper is we cannot say that the question paper is a tough question paper. We cannot say like that, because in the beginning itself, that is on May 20th May, there was a circular saying that 40% of the question paper will be competency based questions. Have you all gone through the circular? So it is clear, it was clearly written in the circular that 40% of the questions will be competency based. So the question paper is in that pattern only. Okay. So this year you have seen the Kadhan, Karan type question. Have you gone through that? Assertion, reasoning questions.
which was not included last year. So there are some changes this year. Okay. Now, we will discuss the question paper later. Before that, the Pathikram syllabus was Sparsh Bhag 2, Sanchain Bhag 2, Apatith Gadyansh, Vyakaran, and Lekhan. These are the topics included in this year. All of you know that. Any doubt in this? These are the lessons deleted. Dohe, Madhur Madhur Mere Deepak, and Gilgit. These are the lessons deleted this year. Okay. Am I going fast? No, ma'am. Okay. Now, in the question paper, there are two parts, Khand A and Khand Ba. Khand A, that is completely MCQ questions. We have out of 80 marks, 40 marks questions are MCQ. Khand A, 40 marks MCQ. उसमें अपठित गद्यांश होते हैं. अपठित गद्यांश, 2 अपठित गद्यांश दिए होंगे. उसमें कोई चॉइस नहीं है. दोनों का children have to attempt both the comprehension passages. तो 2 दिए होंगे, दोनों का लिखना है, आंसर्स देना है. 5 plus 5, 10 marks. Then Vyakaran, 16 marks. And Sparsh Bhag 2, get the or pad together, 14 marks. That is 10 plus 16 plus 14, 40 marks for Khand A. This is the pattern of question paper. Khand A only MCQs, 40 marks, and Apadhit Gadyamsh, 5 plus 5, 10 marks. Vyakaran, 16 marks. Sparsh, get the or pad, 14 marks. This is how 10 marks, 40 marks MCQ. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now, इसमें कैसा क्वेश्चंस कैसा पूछा जाता है? 2 अपठित गद्यांश दिए होंगे और दोनों का उत्तर देना है. उसमें कोई आंतरिक विकल्प नहीं है. 2 दिए होंगे. Last year there were 4 comprehension passages, and out of that the children had to attempt 2. This year it is not like that. Only 2 passages will be given and they have to attempt both the passages. Gadyansh, दोनों 200 words. The size of the passage 200 शब्द का होगा. गद्यांश 1 में 5 क्वेश्चन होंगे और गद्यांश 2 में भी 5 क्वेश्चन होंगे और सबका 1-1 मार्क. That is अपठित गद्यांश 10 marks. Okay, that is question number 1 and 2. Now, व्याकरण 16 marks. व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? First is पदबंध. पदबंध, संज्ञा पदबंध, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण. ये सब पद. संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध. पदबंध में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से 4 लिखना है. Then comes वाक्य. रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य. उसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से 4 के उत्तर देना है. फिर समास है और उसके बाद मुहावरा. समास में भी 5 क्वेश्चन पूछेंगे और उसमें से 4 लिखना है और मुहावरे में 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें से 4 का उत्तर देना है. व्याकरण इस प्रकार है. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो अपठित पद्यांश, अपठित गद्यांश 2 गद्यांश दिए होंगे और दोनों का उत्तर देना है. 10 marks. व्याकरण में 21 questions will be asked and out of that 16 questions to be attempted. Okay. Then स्पर्श भाग 2 टेक्स्ट बुक गद्य और पद्य में से क्वेश्चन MCQ किस प्रकार आता है? पठित पद्यांश पर 5 1 अंकीय बहुविकल्पी प्रश्न. मतलब ये है कि पठित पद्यांश का the padyamsh will be given, the lines will be, poem will be given, and based on the poem 5 questions will be asked MCQ. Then other than this, निर्धारित कविताओं के आधार पर, निर्धारित कविताओं के आधार पर, इसका मतलब यही है कि उसने कविता नहीं दिया होगा, सिर्फ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 1 मार्क, 2 marks. ओके. सो पद्य में से
5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और 2 मार्क्स का होगा। 5 मार्क का क्वेश्चन इस प्रकार आता है, पद्यांश दिया होगा और उस पर आधारित 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और निर्धारित कविता का मतलब यही है कि उसमें कविता नहीं दिया होगा, किसी भी 2 कविता से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी। ओके, नाउ गद्य उसी प्रकार, गद्य ऑल्सो द सेम पैटर्न। पठित गद्यांश पर 5 एक अंकीय बहुविकल्पी प्रश्न। उसका मतलब यह है कि गद्यांश दिए होंगे और उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और एमसीक्यू। निर्धारित पाठों के आधार पर मतलब यही है कि कोई गद्यांश नहीं दिया होगा, सिर्फ 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, किसी भी पाठ से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका ऑप्शंस भी दिया होगा, बहुविकल्पी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 5 + 2 7 मार्क्स। सो 7 मार्क्स पद्यांश से और 7 मार्क्स गद्यांश से। सो टोटल स्पर्श से 14 मार्क्स। इज इट क्लियर? 40 मार्क्स एमसीक्यू इस प्रकार है। अपठित गद्यांश कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 10 मार्क्स, व्याकरण 16 मार्क्स और स्पर्श में से 14 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. This is MCQ, बहुविकल्पी प्रश्न. Now coming to खंड बा, सेकंड पार्ट, वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में सिर्फ वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और वहां भी आउट ऑफ 80 40 मार्क्स फॉर खंड बा। खंड बा में किस प्रकार प्रश्न आता है? खंड गद्य खंड से 3 में से 2 प्रश्न, 60 वर्ड्स, always stick on to the word limit. You need not write 3 marks question means only 60 words are required. So गद्य भाग से 2 प्रश्न लिखना है, 3 दिए होंगे और उसमें से 2 का उत्तर देना है। 3 marks, 3 marks means 60 words. उसी प्रकार काव्य में से भी, कविता में से भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से 2 का उत्तर देना है, वो भी शब्द सीमा 60 शब्दों में उत्तर देना है, 3 मार्क्स। और पूरे पुस्तक संचयन में से भी 3 प्रश्न दिए होंगे और उसमें से 2 का उत्तर देना है, वहां भी शब्द सीमा 60 वर्ड्स है और मार्क्स 3 मार्क्स है। तो क्वेश्चन, अगर इफ यू सी द क्वेश्चन पेपर वी विल अंडरस्टैंड दैट 3 marks question means 60 words. 4 marks question means 80 words. 5 marks question means 100 words. That means 1 mark for 20 words. Is that clear? Yes. Okay. So if you analyze the question paper, it's very clear. Always 3 marks means only 60 words are needed. 4 marks means you need to write only 80 words. 5 marks means 100 words and MCQ 1 mark. This is how the marks are divided. Okay. Then Lekhan 22 marks. स्पर्श में किस प्रकार वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाता है? निर्धारित गद्य खंडों पर आधारित 2 प्रश्न, 3 + 3. So the passage will be given or no, passage will not be given. निर्धारित गद्य खंडों के आधार पर 3 प्रश्न, any 3 questions will be asked and out of that the child has to attempt 2 questions, 3 marks each. और निर्धारित काव्य खंडों पर आधारित 3 प्रश्न दिए होंगे और उसमें से भी 2 लिखना है। So 3 + 3 from कविता और 3 + 3 from गद्य, 16 marks from गद्य और पद्य together. Clear? Yes. Okay. This is वर्णनात्मक part B. Now संचयन में, as you all know, we have only 3 lessons and 3 questions will be asked and out of that the child has to attempt 2 questions. अभी 60 शब्दों में, 60 शब्दों में उत्तर देना है और marks 3 marks. Okay. So खंड बा कुल इस प्रकार होता है। स्पर्श गद्यांश में से 2 प्रश्न लिखना है, 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, 6 मार्क्स। पद्यांश में से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, 6 मार्क्स। और संचयन में से
3 प्रश्नों में से 2 का उत्तर देना है 6 मार्क्स। और लेखन में अनुच्छेद लेखन, here also you see 60 शब्द 3 मार्क्स, स्पर्श गद्यांश 60 शब्द 3 मार्क्स, स्पर्श पद्यांश 60 शब्द 3 मार्क्स, संचयन 60 शब्द 3 मार्क्स। Now look, अनुच्छेद लेखन 100 वर्ड लिमिट, शब्द सीमा 100 है, 100 वर्ड्स 5 मार्क्स, अनुच्छेद लेखन के लिए 5 मार्क्स। औपचारिक पत्र लेखन वह भी 5 मार्क्स का है, मतलब 100 वर्ड्स लिखना है। सूचना लेखन देखो उसका 4 मार्क्स है और शब्द सीमा 80 वर्ड्स है। विज्ञापन लेखन 3 मार्क्स है और उसका वर्ड लिमिट 60 वर्ड्स है। लेखु कथा लेखन और औपचारिक ईमेल, so there's a choice, they can either attempt लेखु कथा और औपचारिक ईमेल, वहां भी 5 मार्क क्वेश्चन, मतलब 100 words. Is that clear? Yes, ma'am. So every 20 words, 1 mark. 1 mark question, that is how it is divided. Now, लेखन में अनुच्छेद लेखन 5 marks, औपचारिक लेखन 5 marks, सूचना लेखन 4 marks, विज्ञापन लेखन 3 marks. That's a difference from last year. Okay. Total 22 marks. Vignyapan, lowest mark is for Vignyapan, 60 words and 3 marks. Then Suchana Lekhan, 4 words and 80 marks. And the other 3, 5 marks and 100 words. That is Anuched Lekhan, Patra Lekhan, ya email or Katha Lekhan. 5 marks question. 1 Suchana Lekhan, 4 mark question, and Vignyapan Lekhan, 3 marks question. So Vignyapan bahut chota wana hai, 60 marks. Sorry, 60 words. Clear? Yes. Now, Anuched Lekhan, division of mark. There are some difference in the sample paper when we compare it with last year's. Anuched Lekhan, 100 words, that is Shabda Sima 100 है और उसका अंक विभाजन इस प्रकार है, विषय वस्तु के लिए 3 मार्क्स, भाषा 1 mark और प्रस्तुति 1 mark. This is how marks are divided. विषय वस्तु content 3 marks, भाषा 1 mark और प्रस्तुति 1 mark. This is how the marks are divided. So when you train the children, give them the marking scheme also. This is how the marks are divided. Okay. तो अनुच्छेद लेखन लिखते समय इन बातों का ध्यान देना है. This is there in the curriculum. I took it from the curriculum. होते शुद्ध एवं सरल भाषा का प्रयोग करना है, क्योंकि भाषा के लिए 1 मार्क है, भाषा के लिए 1 अंक है. तो शुद्ध और सरल भाषा का प्रयोग करना है. क्रमानुसार सुव्यवस्थित ढंग से लिखना है. इसका मतलब यह है कि उसमें संकेत बिंदुएं दिए होंगे, संकेत बिंदुएं होंगे और उसका विकास क्रमानुसार लिखना है, सुव्यवस्थित ढंग से लिखना है. विचारों की पुनरावृत्ति ना हो, एक ही बात को बार बार ना लिखना हो. बच्चों के पास अगर एक पॉइंट है तो उसको बार बार लिखकर 100 वर्ड्स लिखना, ऐसा नहीं लिखना है. विचारों की पुनरावृत्ति ना होना, भाषा संबंधी त्रुटियां ना रहना है, शुद्ध भाषा ही लिखना है. विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना है, जहां फुल स्टॉप डालना है, कॉमा डालना है, कोटेशन डालना है, व डालकर विराम चिन्हों का सही उपयोग करके अनुच्छेद लेखन लिखना है. और वेरी इंपॉर्टेंट, शब्द सीमा का ध्यान रखना है. 100 words means 100 words, or 105 or 110 doesn't matter. But when if they are writing more on Anuched Lekhan, then what will happen? Sometimes they will not be getting time to finish the paper. That is the problem. So if they are writing 120 words, nobody is going to reduce the mark. Okay. So sometimes they will not be getting time to complete their paper. And if they are writing only 50 words, then they will not get full marks. That is also there. So शब्द सीमा कुछ ज्यादा हो या कुछ कम हो, 90 हो या 110 हो, कोई बात नहीं. ओके. सो बच्चों को कहना है कि लिखने के बाद गिनने की कोई जरूरत नहीं है. ओके. शब्द सीमा का ध्यान रखना है. सो क्लियर? Yes, ma'am. Okay. That is अनुच्छेद लेखन. Now the next is पत्र लेखन. पत्र लेखन का भी 100 words. Word limit is 100. और इसका अंक विभाजन इस प्रकार है. आरंभ और अंत की औपचारिकताएं, उसके लिए 1 मार्क और विषय वस्तु 2 मार्क
और भाषा 1 मार्क, प्रस्तुति 1 मार्क. That is how 5 marks are divided. Okay, last time there was some difference. विषय वस्तु 2 मार्क है, इस बार विषय वस्तु के लिए 2 मार्क और भाषा के लिए 1 मार्क, औपचारिकता के लिए 1 मार्क और प्रस्तुति के लिए 1 मार्क. Now, next is सूचना लेखन. उसका कितने मार्क का है? सूचना लेखन 80 words है. So how many marks? 4 marks है, 4 marks है. उसका अंक विभाजन इस प्रकार है. विषय वस्तु के लिए 2 मार्क्स, प्रस्तुति 1 मार्क और भाषा 1 मार्क. That is how सूचना लेखन marks are divided. Okay. Next is विज्ञापन. विज्ञापन बहुत, here it is 60 marks, not 50. विज्ञापन 60, शब्द सीमा 60 है. Last year it was 50, this year it is 60 marks. और विषय वस्तु के लिए 1 मार्क, प्रस्तुति के लिए 1 मार्क और भाषा के लिए 1 मार्क. विज्ञापन not 50, 60. Word limit is 60. Okay, 3 marks. So विज्ञापन लेखन, इन बातों पर ध्यान देना है. This is there in the curriculum. विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेखन होना चाहिए. जिस वस्तु का आप विज्ञापन कर रहे हैं उसके गुणों के बारे में लिखना है. बहुत बड़ा नहीं होना है, विज्ञापन बहुत बड़ा नहीं होना है, बहुत छोटा होना है, संक्षिप्त होना है, आकर्षक होना है, प्रभावशाली होना है और प्रस्तुति में एक नयापन होना चाहिए, वर्तमान से जुड़ाव होना चाहिए. ये सब विज्ञापन लिखते समय इन सब बातों का ध्यान देना है. ये सब आप सब लोग जानते हैं. और द लास्ट वन इज लेखु कथा और ईमेल. या अथवा there's a choice. They can either go for लेखु कथा or for an email. दोनों का अंक विभाजन एक ही प्रकार का है. दोनों की औपचारिकता के लिए 2 अंक है, विषय वस्तु के लिए 2 अंक है, प्रस्तुति के लिए 1 अंक है और भाषा के लिए 1 अंक है. I think email will be more easy for the children if they know the format. It's almost the same as the letter writing. Content will be the same. Only the औपचारिकता में फर्क होती है. You can train the children both लेखु कथा or email. Let them choose whichever is easy for them. Okay. Clear? Yes, ma'am. Okay. So this is these are the types of questions which are coming in the question paper. Are you all aware of this? Yes, sir. Yes, ma'am. Okay, okay. There is no need of much explanation on this part. Okay. Now, which are the types of questions coming? MCQ, 1 mark question. This is what I have already told you now. MCQ, all MCQ carries 1 mark in the question paper, in the sample question paper, all MCQ 1 mark, and we have how many questions? 40 MCQs, 40 marks for MCQ, 40 questions will be there. Okay, short answer type, 3 marks question. Short answer, 3 marks, that is 60 words. We have MCQs, short answer type questions, then long answer, that is 4 mark question. Only 1 question is the Suchna Lekha. Okay, very long answer, 5 mark question. Which are the 5 marks questions? Email. Okay, these are the 5 marks questions. 5 marks questions are Anuchhed Lekhan, Patra Lekhan, email Lekhan, ya Kahani, Lekhu Katha. And long answer, only Suchna Lekhan. 4 marks, only Suchna Lekhan. And short answer from Gadya और पद्य में से short answer आता है और विज्ञापन के लिए भी 3 marks. Clear? Teachers? Yes, teachers. Yes, ma'am. हाँ जी, it's clear हो गया, clear हो गया. No, कुछ नहीं. Okay. Now, how should we give practice? Now we have around 3 months now, 3 months with us, and almost everybody might have finished the syllabus, isn't it? Or 1 or 2 lessons will be remaining. Otherwise, all portions may be over, isn't it? Now, how the revision has to be done? Excuse me, ma'am. Okay. Can I ask one question? Yes. Ma'am, this time actually CBC has told that the
reason, assertion and reasoning type question Yes, will be, yes, that is yeah. there. We are So coming can to you- that. thank you. When I discuss the question paper, I'll tell you that. This year Ha. it is introduced. Okay. Yeah, it will be When we there. discuss the question paper, I'll tell you how to explain that. Okay. Okay, thank you. Now, how revision has to be done. Discussion of question paper is very important. Sample paper is there, and you will get some other question paper, and we can make your own question paper in the same pattern which is given in site, CBSE site. Then remedial classes have to be conducted. If the after every test, you have to conduct a remedial class and tell the children this is how the answers are to be written. You have made a mistake here. All these things have to be told to the children. Then cyclic test. I mean cyclic test. By cyclic test, what I mean is that you give a very short portion to the children and tell them to study only one lesson. Next day morning, you give them 10 questions only from that lesson. And when you give the revision test, give only these type of questions. Okay. Only the questions which come, only that type of questions should be given to the children. Don't give extra questions to test their knowledge and all. Only the CBSE question paper, look into the CBSE question paper and give them that type of questions. Okay. Enrichment classes, tips for board exam, all these are to be given to the children. How the question, tip for board exam means, if it is a 5 marks question, you write the answer in 100 words. If it is a 4 mark question, you write the answer in 80 words. If it is a 3 mark question, then only 60 words are needed. All these tips are to be given to the children. Okay. And teach them to complete a question paper in time. So revise the syllabus as per the sample question paper. Whenever you do the revision work, revise as per the sample question paper. Give practice according to the latest pattern. That is the latest sample paper. Take the sample paper which is released by CBSE now and give practice according to that pattern. And do not overburden your children with too much of information. For example, if you are teaching them samas, teach them only samas. Don't teach them sandhi here. Okay. Don't teach them what is the difference between sandhi and samas. All that would have been done earlier, not now. Okay. So don't overburden your children with too much of information. Whatever is needed for the board exam, train them in that path. Did you understand what I meant? Yes, ma'am. Okay. And always follow the bird limit that I have already told you. So follow the bird limit. Shabd seema par dhyan dena hai. And more practice to be given on assertion and reasoning questions. The children have not yet written any assertion reasoning questions. And that part is new for the teachers also. You have never trained your children on assertion and reasoning question, isn't it? We never had assertion reasoning type questions so far. So the first time, this is the first time we are getting questions of this type. So the teachers should also work on that. Okay. Is it clear this much? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, any doubt? If it is clear, then we will go to the question paper part. Yes, ma'am, it's clear. It's clear. So the pattern of question paper is clear. How the marks are distributed, that is also very clear. Okay. How the value points, how the marks are given to the children, value points, which are how is the marking scheme, that is also clear, isn't it? Now, do you all have the question paper with you, sample paper? Yes. Do you have it with you, or I'll share it? Is it visible, sample question paper? Can you see that? Ma'am, it's not visible. Ma'am. It's not visible? No? No, ma'am. No. No. Okay. Okay, I'll stop this slide and share it.
Is it visible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी अब दिखाई दे रहा. Okay, okay, thank you. So this is the sample paper as we discussed. इस प्रश्न पत्र में दो खंड है, खंड आ और बा. खंड आ में 45 होगा और उसमें से 40 लिखना है. बा में अंतर, all this we have already discussed all that. Now look, खंड आ, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपठित गद्यांश है, उसमें एक गद्यांश दिया होगा और उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं. 1 into 5 marks. Okay. We are not saying the answers now. I don't think we have time for all that. So this I'll discuss only the assertion reasoning part. Okay. So the first question, 4 options. Do you want to discuss it now? Ma'am, we want more discussion about us. Assertion, and the other thing is very common, or you can do it. Now look at the question number 5. That is assertion reasoning question. Okay. निम्नलिखित कथन, ये means assertion, तथा कारण R को ध्यान पूर्वक पढ़िए. उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए. The question is clear, isn't it? Kathan, assertion will be given, a statement will be given, and the reason is also given. कथन और कारण दिया होता है और उसके बाद 4 ऑप्शन दिया जाता है. The question is निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़िए और उसके बाद विकल्पों को पढ़िए, फिर सही उत्तर चुनकर लिखिए. That is the question. Now see कथन. भारतवर्ष में कला एवं संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन हर समय हुआ है. Based on the passage, that sentence is given. और उसका कारण दिया है, रीजनिंग दिया है. रीजन ये है, भारतीय वास्तुकला एवं मूर्तिकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है. That is the reason. So one statement and one reason is given. Okay. Now all of you see the 4 options. कथन A तथा कारण R दोनों गलत है. The assertion A and R दोनों गलत है. That is the first option. The second option is कथन A गलत है लेकिन कारण R सही है. कथन गलत है लेकिन कारण सही है. That is the second option. कथन सही है लेकिन कारण उसकी गलत व्याख्या करता है. That is the third option. If you have the question paper, you take it and see that. Otherwise, somewhere you please note down these 4 options. First option A, कथन तथा कारण दोनों गलत है. Just write A and R wrong. Second option is कथन गलत है, A wrong and R correct. Third option is कथन सही है, A correct and कारण R गलत है. And the fourth option is कथन A तथा कारण दोनों सही है तथा कारण R कथन A की सही व्याख्या करता है. मतलब दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है. That is the fourth option. Have you all copied down these options in your notebook? If not, please note it down. Or if you have the question paper, keep the question paper open with you. Have you noted? Please tell me when you finish it. Yes, ma'am. The options. Only the options. Don't write the answer. Don't look into the Kathan and Karan. Write only the options in your notebook. Okay. Have you done, teachers? Yes? Only the 4 options. Have you noted it down somewhere? Please give me an answer. Yes, ma'am. Yes, yes. Now, let it be there. Don't think anything about that. Now, second question, another question on assertion reasoning is question number 9, third question. Let us see. Question number 9, third question. That is the second question on assertion reasoning.
Okay. Third question. Can you see that? This one. निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनकर लिखिए. That is the question. कथन, assertion. उनके गीत भाव प्रवण थे, दुरूह नहीं. कौन सा लेसन? कौन सा लेसन? शैलेंद्र. तीसरी कसम. Good. So कथन ये है, उनके गीत भाव प्रवण थे, दुरूह नहीं है. That is the statement given, and the reason is शैलेंद्र द्वारा लिखे गीत भावनाओं से ओतप्रोत थे, उनमें गहराई थी, गीतों की भाषा सहज सरल थी, क्लिष्ट नहीं थी. This is the कारण. Okay. Now don't forget about the karan, kathan and karan, and go through the options. What are the options given? कथन तथा कारण दोनों गलत है. Option 1 is कथन तथा कारण दोनों गलत है. Look into your paper. What was the first option in the other question? Was it the same? Haven't you written the option of the first question in your notebook? Yes, it is same. तीनों एक जैसे हैं. तीनों एक जैसे आंसर वो. Yeah, तीनों नहीं, all the four. So yes, options are the same. The first option in the other question, the first option in the first question, अपठित गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए थे, उसका first option क्या था? कथन तथा कारण दोनों गलत है. That was the first option. The second option was कथन गलत है लेकिन कारण सही है. Third option was कथन सही है लेकिन कारण गलत है. और the fourth option was कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही व्याख्या करता है. That was the fourth option. Isn't it? Yes or no? Yes. So understand one thing. Tell your children that when कथन कारण वाला question आता है, उसका options हमेशा इस प्रकार होता है. Okay, this will be the order of options every time in all the subjects. It is like that. So options, these will be the options. These will be the options given. Is that clear, teachers? So options. These are the four options given. Now let us see how to write the answer. Now look at the kathan. So options will be the same. Kathan, the first one, we'll do this because this is based on the lesson. So kathan, uske geet mein geet bhav pravan the, duruh nahi. Is it correct? उसका कारण शैलेंद्र की लिखित गीत भावनाओं से ओतप्रोत है, बट उसकी भाषा तो सहज सरल और श्रेष्ठ नहीं है. So look at the first sentence, kathan. Is it correct? Based on the lesson, is it correct? Yes. Is it a correct statement? Yes. Yes, it is a correct statement. So what is our first option? Kathan तथा कारण दोनों गलत है. So that you can, that is not the answer, isn't it? Because the first was correct. So you need not look into option K. Is it clear? Yes. Okay, ma'am. If option कथन तथा कारण दोनों गलत है. Now the second option is also कथन गलत है लेकिन कारण सही है. Do we have to look into that? No need. No need. Because kathan is right. कथन सही है. So if कथन सही है तो first two options you can neglect. Don't look into that. Okay. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, If the first statement, that is if kathan sahi hai to first two statement will not be the answers. First two options will not be the answer. Now look at the third option. Kathan sahi hai lekin karan uski galat व्याख्या करता है. Now third and fourth option kathan will be correct. Kathan sahi hai. So kathan sahi hai. Look at that. Kathan sahi hai lekin karan uski galat व्याख्या करता है. The fourth option is kathan sahi hai lekin कारण इसका सही व्याख्या करता है. How will you find out? There's an easy way to find it out. This is what I feel. Okay. Tell your children, read the first sentence.
उनके गीत भाव प्रवण थे, दुरूह नहीं है। ऐड क्योंकि शैलेंद्र के द्वारा लिखे गीत भावनाओं से ओतप्रोत थे, उनमें गहराई थी, गीतों की भाषा सहज सरल थी, क्लिष्ट नहीं है। इज इट करेक्ट देन? यस, दोनों सही है। बीच में क्योंकि ऐड करके उसके पढ़ के देखो, दोनों सही है। दोनों सही है। दोनों सही है। Okay, that is, so this is how we are finding out the answer. उसके बीच में क्योंकि लगाकर, in most of the cases it will be like that. So बच्चों को कर देना, read assertion पढ़ना है, उनके गीत भाव प्रवण थे, दुरूह नहीं है, क्योंकि बीच में क्योंकि जोड़ के दूसरा भाग पढ़ लीजिए। अगर सही है तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा वाला। चौथा वाला सही होगा, नहीं है तो तीसरा वाला सही होगा। Yes? Clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So this is, I think you can give practice in this way. Okay, Kathan Karan. So it is not very tough as we thought. Only thing is that children should understand the meaning of the sentence which is given. Kathan Karan, any doubt on this? No, ma'am. No. So always tell your children that the options will be the same. Okay, options will be the same. Read the first sentence. Kathan पढ़ के देखो, और अगर कथन सही है तो first दो options will not be the answers. Yeah? अगर कथन सही है तो का खा will not be the answer. फिर देखना है, क्या देखना है? पहले कथन पढ़ के उसके बाद क्योंकि बोल के दूसरा सेंटेंस पढ़ के, अगर please mute yourself. Will you please mute yourself if you are not asking any doubt? Thank you. So, clear? Should I repeat it again? No, ma'am. Clear. No, ma'am. Kathan Karan, which we thought that will be a very tough question, it is not as tough as we thought. Okay. Yeah? So train them. So they will not understand if you give only one sentence. What should you do? You give them small paragraph or take small paragraph from the text and you make sentences, questions like this and train them. So when you give the when you are training them, give them small passage and small sentences. Then later you give this type of. You have to spend some time on this. Okay, Kathan Karan wala question. Clear? जी. और कौन सा टाइप है? और we have this time Options. Okay. केस स्टडी वाला क्वेश्चंस भी आया है. Question 7 fifth one केस स्टडी है. क्वेश्चंस निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन दीजिए. That is case study. That is 5th question. See. निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़े. हमें मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए, बाह्य आडंबरों का विरोध करना चाहिए, मार्ग की विपत्तियों को ढकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, हमें अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए. सो बेस्ड ऑन दिस पद्यांश से मेल खाते वाक्यों के लिए उचित विकल्प चुनिए. So they have to read these sentences. और उचित विकल्प क्या है? 1, 2 and 5. Is it correct? 1, 2 and 5. Which one is the correct answer? No. Second option? No, option 2 is wrong. Read it once again. Question 1, 2 and 5. See the first one. हमें मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए. 2 आडंबरों को करना चाहिए. 5
Will you please mute? Will you please mute, teachers? Okay, thank you. Read all the options and find out which is the correct answer. हमें मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए. Is it correct? If it is correct, put a tick mark against that. बाह्य आडंबरों का विरोध करना है. Is it there? No, नहीं. No. So that is not there. Then put a cross mark against that. Now the third is मार्ग की विपत्तियों को ढकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए. Is it correct? Is it correct based on the poem? Is it correct? हमें मार्ग की विपत्तियों. Yes. Then put a tick mark. Put a tick mark against that. Then the fourth option, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए. Is it written there in the poem? No. Cross mark against that. हमें अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए. Is it there in the poem? Yes. Then विचाद पद्यांश से मेल खाते हुए वाक्यों के लिए उचित. 1, 3 and 5. 1, 3 and 5. Second. 1, 3 and 5. That is second option. 1, 3 and 5. Isn't it easy now? So if it is correct, then put a tick mark. If it is not related, if it is not correct based on the poem, then put a cross mark against that and read the options. So that is the easiest way. Case based. Clear? Yes. Clear. Thank you. Okay. We see one more question. Question number 5, third question. Let me see. Question number 5. Okay. Question number 5, third question. That is also very easy. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए. गृह प्रवेश. Is it द्वंद्व समास? No. Then what should you do? Put a cross mark there against it. साफ अव्ययीभाव समास. Is it correct? No. Yes. No. साफ. Then which Yes. समास? Yes. Yes. Then त्रिकोण तत्पुरुष समास. नहीं. Correct? नहीं. Wrong. नहीं है तो wrong डालना है. Then त्रिकोण मृगलोचन बहुव्रीहि समास. Correct. सही है. सही है. तो उत्तर क्या होगा? गृह प्रवेश द्वंद्व समास. Is it correct? It's wrong. साफ अव्ययीभाव. Is it correct? Yes, it is correct. Second one is wrong. Second is correct. Trikot tatpurush samas, that is wrong. Third is wrong. Then the fourth one, mrigalochan bahuvrihi samas, that is correct. So which are the correct answers? Second and fourth. Second and fourth. Second and fourth. So which option? Third option. Good. Option G. Okay. So this is how it has to be done. Clear? Yes, ma'am. Okay. Now another question is from the Apatit Gadyamsh that may not be very, we need to read the passage and only then we can write it. So that you can do when you get time. Okay. So this is the pattern of question paper. Any other doubt? Then Varnanatmak Prashna, second part B. So these are the questions which are coming in question Khand A. Grammar part is very easy. That is what I felt. Now let us see Varnanatmak Khand Ba. Questions are all different this time. All competency based questions. See. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए. That is 3 into 2. 1 into 2 is wrong. You can cut it. 3 into 2, 6 marks. Okay. See,
भ्रमण हम सभी के जीवन का अभिन्न अंग है। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच चैन से भरे कुछ पल शायद हम इसी प्रकार निकाल सकते हैं। शांत वातावरण में अपने तथा अपनों के लिए जीवन व्यतीत करना आवश्यक है। आपके द्वारा इस पाठ्यक्रम में पढ़े गए पाठ में चैन भरे पल बिताने के लिए लेखक ने क्या किया, वास्तव में सभी को इसकी आवश्यकता है। अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसमें किसी पाठ का नाम नहीं लिखा दिया है। तो which lesson is that? चैन की देन। Chain ki den. So when we read, we will understand. When the children read this, they should understand that this is from chain ki den. Only then they can write the answer. If they understand that this is the lesson, then they can very well write the answer, isn't it? So this is how questions have come this time. Now the second question. डायरी का एक पन्ना के माध्यम से आपने गुलाम भारत के स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के विषय में जाना। आज हम आजाद भारत के आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश के प्रति अपने कर्तव्यों को बताते हुए पाठ से प्राप्त सीख का वर्णन कीजिए। So they should know डायरी के पन्ने में क्या बताया गया है और उसका आज के आजादी का अमृत महोत्सव के साथ, आज के समय के साथ उसकी तुलना करना है। Okay. So don't expect that only the questions given at the end of the lesson will be asked in the question paper. It will not be like that. This is called competency based application of what we have learned. Okay. So teach the children in this day. That is why I have told you we have 3 months time with us, and after finishing all the lessons, give practice in this way. Till last year we had questions like this. That was not the last year. The chain ki then part ke aadhar par bataiye ki questions were asked in that way, isn't it? It has changed this year. Now, third question. इस वर्ष अपने पाठ्यक्रम, see all the questions are like that. इस वर्ष अपने पाठ्यक्रम में ये के पाठ्यक्रम में वो है, किसी पाठ का नाम नहीं बताया गया है। इस वर्ष अपने पाठ्यक्रम में लोक कथा पर आधारित एक कहानी पढ़ी है। कौन सी कहानी? कथा। यह कहानी समाज की विसंगतियों को दूर करने का संदेश देती है। कथन का मूल्यांकन करते हुए अपने विचार लिखिए। Okay, the same answer. तंतरावामिरों के त्यागमयी मृत्यु का क्या परिणाम निकला? Almost the same answer. So but the question is asked in a different way. Clear? Yes. So the have to work a lot to train the children, right? Utilize that time properly. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 60 शब्द में लिखिए। आपके द्वारा इस पाठ्यक्रम में पढ़ी किस कविता की अंतिम पंक्तियां आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है और क्यों? So this is an open-ended question. Children can write any poem. But they have to write why. क्यों वो लिखना है। आपके इस पाठ्यक्रम में पढ़ी गई किस कविता की अंतिम पंक्तियां आपको सर्वाधिक प्रभाव करती है? So they can choose any poem, whichever poem they like, they can write about that. But उसका क्यों, why part should be correct. Clear? It's an open-ended question. See the next question. कबीर और मीरा की भक्ति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तुलनात्मक अध्ययन है। कबीर और मीरा की भक्ति का विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपने कबीर के भक्ति के बारे में पढ़ाया है, मीरा की भक्ति के बारे में भी पढ़ाया है, लेकिन उसकी तुलना करके पढ़ाना है। क्लियर? So all these clear. So don't expect only the questions at the end of the lesson. आपके पाठ्यक्रम में आपके पाठ्यक्रम में किस कविता में वर्षा के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है? किस कविता? पर्वत प्रदेश में पावस। तो if the question is पर्वत प्रदेश में पावस कविता में
प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? चिल्ड्रन विल राइट द आंसर वेरी सून, बट द क्वेश्चन इज नॉट लाइक दैट। आपके पाठ्यक्रम में किस कविता में वर्षा का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है? राइट द आंसर फर्स्ट फॉर दैट, देन अपने शब्दों में उसका वर्णन कीजिए। सो दे शुड राइट, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है और फिर उसका वर्णन करना है। ओके ओल्ड क्वेश्चंस आर लाइक दैट। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है, उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी ही रहती है, लेकिन लोग आशंकाओं को नजरअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं। हरिहर, these are the lines from the story। हरिहर काका सभी के लिए चाचा का विषय बने हुए थे। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की राय तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन इज ओनली दैट मच। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की राय, गांव वाले का अभिप्राय क्या क्या थे, इसको स्पष्ट कीजिए। ठीक है। स्काउट परेड करते समय लेखक स्वयं को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी जवान समझने लगता था। कथन के आलोक में अपने विचार प्रकट करते हुए बताइए कि विद्यालय में प्रशिक्षण व गतिविधियों की क्या उपयोगिता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन। बाल मन किसी स्वार्थ या हिसाब से चलायमान नहीं होता। बचपन प्रेम के रिश्ते के अलावा किसी और रिश्ते को कबूल नहीं करता। टोपी शुक्ला पाठ में टोपी अपने परिवार के एक सदस्य को बदलने की बात करता है। उसकी सोच के आधार पर उसकी मनोदशा का वर्णन कीजिए। टोपी किसको बदलना चाहता है? दादी माँ, दादी माँ। अपनी दादी को, अपनी दादी को। So last year the question was like that, टोपी अपने दादी को क्यों बदलना चाहता था? That was the question. This time the question has been twisted. Clear? Yes. So train the children in this way. So the teachers have to do a lot of work, isn't it? No answer? So the time which you have with you, utilize it properly. So have an idea of the question paper. This is how the questions are coming. You take a hard copy of the CBSE sample question paper, read it, understand it, and then teach the children. Train the children for writing the board exam. Okay, question paper is not very tough. You cannot say that the question paper is tough. Question paper is a balanced question paper. It's a good question paper. We have to change our attitude. Teaching attitude have to be changed. Not give one question, this question will come, you have to write the answer like this, not like that. This is competency based. Clear? Yes, ma'am. Clear, ma'am. Yes. You have anything to ask? You have raised the hand. मैम, Ah. पत्र लेखन, औपचारिक पत्र लेखन में प्रधानाचार्य को पत्र सैंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं है, तो इससे इसी तरह का प्रश्न नहीं होगा। केवल नहीं, औपचारिक पत्र में अनेक प्रकार के पत्र आते हैं ना। औपचारिक पत्र में सिर्फ प्रधानाध्यापक को नहीं है। हाँ, संपादक के लिए पत्र है। We cannot say that it will be that. There are different types. औपचारिक पत्र लेखन में उसमें दिया है कौन कौन से टाइप आता है। एक मिनट। व्यावसायिक पत्र आ सकता है, डिफरेंट टाइप्स आर दैट। आई विल गिव यू। औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र आ सकता है, आवेदन पत्र आ सकता है, शिकायती पत्र आ सकता है, कार्यालयी पत्र है, व्यावसायिक पत्र है और संपादकीय पत्र है। इनमें से एक आ सकता है। There will be a choice. If you want, you can note it down. प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, कार्यालयी पत्र, व्यावसायिक पत्र और संपादकीय पत्र। इनमें से एक या दो पूछे जाएगा, उसमें से एक लिखना है। स्मिता मैम, इज इट क्लियर? यस मैम।
Thank you, ma'am. Don't expect only प्रार्थना पत्र. Okay. आवेदन पत्र भी आ सकता है. संपादकीय के नाम पर एक पत्र लिखना वो भी आ सकता है. 6 types are there. Okay. Any other doubt? मैम हाँ. मैम ईमेल लेकिन में इंग्लिश में ही एड्रेस लिखना है क्या? कई जगह इंग्लिश में देखता है. आप बच्चों को हिंदी में सिखाइए. प्रेषक का ईमेल पता, प्राप्तकर्ता का ईमेल पता. You can give that way. Okay. ओके मैम. और एक क्वेश्चन ये पत्र from to like that. अच्छा मैम अब ये पत्र लेखन में कई सैंपल आंसर पेपर में मैंने देखा कि वहाँ सेवा में से आरंभ कर रहे हैं. एक्चुअली प्रेषक और प्रेषक सेवा में ऐसी स्टेप में करना है? ऐसे नहीं, वो चेंज हो गया है. सेवा में से ही शुरू होता है. अच्छा, प्रेषक पहले लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना? नहीं. अच्छा, थैंक यू मैम. वो प्रेषक का एड्रेस नीचे लिख सकता है. सेवा में से ही शुरू होता है. ओके. अच्छा मैम. एनी अदर डाउट? मैम अगर मैम लेट मी आस्क. आवेदन पत्र लिखते समय प्रेषक है. आवेदन पत्र लिखते समय आपको प्रेषक नहीं लिखना है. सबसे ऊपर परीक्षा भवन लिखना है और एड्रेस लिखना है. तो फिर उसके बाद सेवा में लिखकर टू किसको है वो लिखना है. आवेदन पत्र है तो है ना? आवेदन पत्र में वो लिखना है. ओके, थैंक यू मैम. और एनी अदर डाउट? मैम एक और प्लीज. दिस ईमेल लेकिन पे हमें पहले ये एड्रेस लिखते समय इसमें कॉलम बनाना है क्या? बॉक्स के अंदर लिखना है या पत्र लेखन की तरह लिखना है? क्या लिखना है, क्या आप पूछते हैं? क्या मतलब कुछ मॉडल पे देखा है कि प्रेषिती लिख के वहाँ ईमेल एड्रेस लिखा है, वो दोनों एक एक बॉक्स पे लिखा है. नहीं, कोई जरूरत नहीं. प्रेषक का पता लिखकर आप xyz@gmail.com ऐसा लिखना है. इसमें बॉक्स नहीं डालना. ओके, थैंक यू मैम. मैम लोक कथा और ये ईमेल लेखन ऑप्शनल है ना? यस. लेखु कथा है. लेखु कथा या ईमेल. तो आप बच्चों को ईमेल सिखाइए. अगर आपको लेखु कथा लिखना है तो लेट देम राइट. ओके मैम. आप कक्षा में सिखाना ही सिखाना है. मैम एक और डाउट है. सूचना लेखन के पहले इंस्टीट्यूशन का नाम लिखने के बाद सूचना लिखना है. कई सूचना लेखन लिखने के समय वो कई जगह में. I'll show you that slide. Now shall I show this question paper slide? Okay ma'am. Okay, I'll show that slide once again. सूचना लेखन का स्लाइड मैं आपको दिखा दूंगी. So this is the pattern. First you will write the name of the institution, then the program. उसके बाद सूचना लिखना है. दिनांक कई जगह लेफ्ट में लिखा है, राइट में लिखा है, कोई बात नहीं. दिस इज एज पर द CBSE सैंपल. दिनांक लेफ्ट में है, लेफ्ट टॉप में. अगर आप राइट में लिखना है कोई बात नहीं, बच्चों का अंक नहीं कट जाएगा, लेकिन दिनांक लिखना है. ठीक है. So this is the correct format. इंस्टीट्यूशन का नाम पहले लिखना है, उसके बाद कौन सा प्रोग्राम है वो लिखना है, उसके बाद सूचना लिखना है. Clear? Okay ma'am, clear. Okay. So ma'am, can you show the slide of email?
I have not written any email. I will just show the pattern. प्राप्तकर्ता का ईमेल पता है, देन प्रतिलिपि ये लिखना है। प्रतिलिपि वहां कोई एड्रेस नहीं लिखना है, लेकिन आपको प्रतिलिपि लिखना है। प्रतिलिपि का अर्थ है सीसी, कॉपी, कार्बन कॉपी। गुप्त या गोपनीय प्रतिलिपि, ब्लाइंड कॉपी। देन दिनांक, समय, दिनांक और समय अपने आप आता है, लेकिन आंसर पेपर में अपने आप नहीं आएगा, तो आप लिखना है। उसके बाद विषय लिखना है, क्लियर। संबोधन है, उसके बाद सस्नेह शुभकामनाएं लिखना है, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। देन औपचारिक विषय का विस्तार है, नीचे आपका नाम लिखना है। मैम इसमें gmail.com इज दैट, वो किस प्रकार लिखना है? in English, xyz@gmail.com. ABC. That you can write in English because your email ID is that. You cannot write it in Hindi. Clear? Now I'll say the intern. So this is how 80 marks board paper. About the internal assessment, I'll just go through that. 100 marks. So this is internal assessment, 20 marks. You all know that. Periodic test, 5 marks, multiple assessment, 5 marks, portfolio, 5 marks, and speaking, listening, 5 marks. This is how 20 marks are divided. I'll show it in slideshow. So internal assessment 20 marks, periodic test 5 marks, multiple assessment 5 marks, portfolio 5 marks, and speaking listening 5 marks. And how periodic tests are conducted? The school will be conducting 3 periodic tests during the entire academic year, and the average of the best 2 will be taken for the final submission. So your school will be, sometimes your school will be conducting the periodic test out of 100. Some schools will be conducting out of 50, 40, and it doesn't matter. At the end, it will be converted into 5 marks. How are you getting that 5 marks? The 3 periodic tests will be conducted in an year, and the average of the best 2 will be uploaded. Okay. And periodic, there is a gradual increase of the portion will be there. The meaning is that for the first periodic test, if you are giving them the first 3 lessons, then the next periodic test, PT2, you will be giving those 3 lessons plus the other 2 lessons which you have taught them later. Did you understand? So for the second, if you have added 3 lessons in periodic test 1, and after that you have taught 2 more lessons, and then you are taking the periodic test 2, then in periodic test 2, you will be having all these lessons. Okay. Periodic test 3, you will be having all the lessons from the beginning till then. That is how the portions are given in periodic test. Clear? The average of the best 2 will be taken. 3 periodic tests will be conducted, and the average of the best 2 will be taken. Portfolio, you know, the portfolio file will be there, and you will be giving them activity, and at the end 5 marks for the portfolio. Do you have any doubt about the portfolio? Should I explain it? Any activity which shows the effort, progress, or the growth of the child, that can be included in the portfolio file. We can give them essay, poem, anything. Or if they are going out and getting some prizes, if they are going out for some other competition and getting a prize, that sample, that certificate can be included in their portfolio. So any
thing which shows the growth of the child, development of the child, that can be included in the portfolio. 5 marks for the portfolio. Multiple assessment, 5 marks. So these are the activities which can be included in multiple assessment. You are taking oral test, class test, individual or group work, classroom discussion, anything. Exit card. What is an exit card? What is an exit card? After every period. After the lesson, we have to ask some So the simple questions which you are asking at the end of every period, that can be included in the exit card mark. Okay. So any activity can be done and the marks are to be reduced into 5. And that is for multiple assessment. Subject enrichment activity is listening, reading, and speaking. Listening test, you can read a passage. Based on the passage, you can give them 5 questions. Let them write the answer. That mark can be taken. Reading, you can take the reading test. You can take debate, just a minute, conversation. 2 बच्चों को बुलाइए, किसी situation दीजिए उनको और उन दोनों के बीच का conversation. Listening test, listening to an audio, or even you can read a passage and based on the passage, we can ask them questions. So this is subject enrichment activity. So internal assessment, periodic test, 5 marks, multiple assessment, 5 marks, portfolio, 5 marks, and this is 5 marks. I think internal assessment, everybody knows. Any doubt in internal assessment? no, ma'am. No. Internal assessment, you have done it last year also. So these are the changes in the question paper and the pattern of question paper. And I think that you understood that Kathan Karan wala question and situation based question, which are new this time. Okay. Shall we stop now? Any doubt? नमस्ते मैम। मैम मेरा एक संदेह है मैम। Yes, I'm here. मैम विज्ञापन लेखन में वर्ड लिमिट कितना है? 60 वर्ड्स है। कैसे बच्चे 60 वर्ड्स में एक विज्ञापन लिखेंगे? आप एक विज्ञापन लिख कर देखिए, बहुत बड़ा सेंटेंसेस नहीं लिखना है उसमें, स्मॉल सेंटेंसेस लिखना है। लेकिन 60 बच्चे पूछ रहे हैं कि 60 वर्ड्स तो नहीं आएंगे मैम, इट विल बी लाइक एन एसे। बच्चे ऐसा you have go through the material available in internet and all. It is possible. Okay. Also, I made my children do it in the class. Okay, ma'am. Thank you. If you are writing about, if you are advertising, ice cream का advertisement है तो ice cream का नाम लिखना है सबसे ऊपर, उसके बारे में उसकी 3 विशेषताएं लिखना है। अगर picture, if you want to draw, if they want to draw the picture, it's okay, not compulsory. Okay. Okay, ma'am. अवेलेबल है, वो सब लिखना है। बहुत बड़ा सेंटेंसेस नहीं लिखना है, जैसे भी नहीं लिखना है। विज्ञापन कैसा होना है? वो आकर्षक होना है और संक्षिप्त होना है। ठीक है। प्रभावशाली भाषा में लिखना है, वो है विज्ञापन के गुण। बहुत बड़ा लिखता है तो कौन देखता है? ओके मैम, थैंक यू। वो विज्ञापन लिखते समय हेडिंग बड़े अक्षरों में लिखना है, वो सब सिखाना है उनको। ओके, थैंक यू। जो लिखता है वो आकर्षक बना। ओके मैम, थैंक यू। मैम, स्टूडेंट्स को कोई रेफरेंस बुक के बारे में हम कोई सूचना दे सकते हैं इस साल? कोई सजेस्टेड रेफरेंस बुक? कैन यू सजेस्ट एनी? I don't know anything like that. I think after seeing the question, we are the best references, isn't it? Yes, ma'am. Latest pattern, they need to
work out some more You are questions. getting so many sample question papers. They can go through the sample question papers which are available. Okay, okay. Thank you, ma'am. हेलो मैम, मुझे एक क्वेश्चन आप रेज करना था. शैल आई रेज दैट क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, ma'am. हाँ मैम, मुझे पूछना था कि मतलब जो वैल्यूएशन करेंगे, मतलब जो टीचर्स जो वैल्यूएशन करेंगे बोर्ड पेपर्स की, उसमें गलतियां कितनी देखी जाएंगी? मतलब अगर कोई स्टूडेंट्स गलती करता है और आंसर लिखने में, तो कहाँ तक गलतियों को देखा जाएगा? मतलब उसमें कोई रिवराइज कर सकते हैं या कितनी गलतियां उसमें एप्टेड है, ऐसा कुछ है? मतलब अगर 3 मार्क का अगर आंसर वो बच्चा लिखेगा, तो अगर वो गलती ज्यादा करता है तो उसमें कितने मार्क काटे जाएंगे? मतलब ऐसा कुछ सोल्यूशन वहाँ पर कोई उपाय है जो कि बच्चों को हम बता सकते हैं? Ma'am, we are not looking into the mistakes. We are looking into the correctness of the answer. जितना सही है उसके लिए मार्क्स देता है, गलतियों की ओर हम नहीं देखते. नहीं, क्योंकि बच्चे जो हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, जो हमारे जो केरलाइट बच्चे हैं, वो ज्यादा हिंदी जानते नहीं है. मतलब ये है कि हमें बहुत फोर्स करना पड़ता है उन्हें कि मतलब ऐसा आप आंसर लिखो, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, या बिकॉज दे आर नॉट बीइंग नोइंग एट ऑल द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एक्चुअली. सो उसमें बच्चों को इतना डाउट लग जाता है कि हम अगर गलती करेंगे तो कहीं हमारे बोर्ड पेपर्स मतलब जब जाएंगे होंगे कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो मार्क्स कट जाएगा, इसका ये है. हाँ, या उनको डाउट इतना है कि स्पेलिंग मिस्टेक से ज्यादा आएगा तो कहीं मार्क ना चले जाए. मतलब के लिए मार्क्स ज्यादा नहीं कट हो जाएगा. और एक ही गलती बार बार आता है तो फिर उसके लिए भी नहीं, एक बार ही मार्क कट जाता है. एक ही मिस्टेक बार बार लिखता है तो एक बार ही मार्क्स कट जाते हैं. और लेटर सूचना लेखन के लिए अगर उसका फॉर्मेट सही है तो उसको फॉर्मेट का मार्क्स मिलता है, उसका कंटेंट सही के लिए मार्क्स मिलता है. Some marks are divided. I told you, no, this is how the marks are divided. उस प्रकार मार्क्स मिलता है. अगर कुछ गलती है तो बिल्कुल 0 नहीं मिलती. हाँ, ओके. क्योंकि बच्चे जो हैं कि वो ज्यादा गलतियां करते हैं शब्द. हाँ, उन्हें क्या लिखना ज्यादा अगर आता नहीं हो तो उस पे अपने हिसाब से लिख लेते हैं, वो अपने हिसाब से शब्द बनाकर लिखते हैं, तो वो शब्द कहीं कहीं गलत हो जाता है. तो if the idea is there, normally we give mark. The children always get the benefit. Yeah, because most probably the children have the habit of doing the mistakes actually. Because you don't tell the children that even if you make a spelling mistake, you will not get lose mark. Don't tell them like. Tell them that. Learn the correct answer. Okay, we have to encourage them actually. Yeah, we're doing this so like, but actually they have to put some questions. So they are asking. We have to just give a reply as as what they have to feel. Actually, the favorable reply needed. So that's the thing. The children always get the question. Okay, thank you, ma'am. But don't tell them that you always get the benefit. Tell them learn properly, write well, write neatly. Tell all these things. Okay. Yeah. Okay, thank you. Thank you very much. Good evening, ma'am. Yes. Can you give any guidance in teaching muhavare? Muhavara. I expect that the muhavara which are there in the lesson will be coming. We can hope for that. And this time it is easy. Match the following, and since it is given in the bracket, it's not that much tough, isn't it? So tell them when they learn the lesson, when they read the lesson, ask them to highlight the muhavara and learn the meaning. That is how we are doing. After every lesson, tell the children to highlight the muhavara in that lesson. Write it in a notebook. Meaning भी लिखना है और उसको पढ़ना है. Okay, ma'am. Thank you. We hope that all the muhavaras come from the lesson. We can just hope. I'm not very sure. I'm not guaranteeing. No guarantee. Okay, ma'am. Thank you. In sample paper, all simple muhavaras are given, isn't it? Good evening, ma'am. तो ये मिश्र वाक्य आसान से समझने के लिए और कोई तरीका है? मिश्र वाक्य
एक वाक्य दूसरे पर आधारित होगा। तो जब तब जब मैं वो करता है था तब ये हुआ, जो वह, यहाँ वहां, जितना उतना, उस प्रकार आता है मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य है तो उसमें दो स्वतंत्र वाक्य आता है, उसके बीच में और आता है, दोनों वाक्य स्वतंत्र होता है। मिश्र वाक्य में एक दूसरे पर आधारित होता है। तो उनको बोल देना ये वो, जब तब, ऐसा वैसा, जितना उतना, इस प्रकार शब्द आते हैं। That's a Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Any other doubt? Yes, Seema ma'am. You have raised the hand. Good evening, ma'am. Yes. Yes, ma'am. I have to clear one doubt that for the spelling mistakes, we can detect the mark, and for the format mistake, like for the letter formatting, do we need to detect the mark? Normally in board exam, we are not deducting mark for the spelling mistake. If the format is not correct, you can deduct some mark when you are correcting it in the class. Only then they will learn the correct format. Okay, ma'am. Thank you. Teach them the format and let them follow the format, because there is a mark. औपचारिकता आरंभ और अंत की औपचारिकताएं के लिए एक अंक मिलता है। अगर वो ठीक है तो they are getting the mark. Yeah, okay, ma'am. Thank you. And it was a nice session with you. Thank you, ma'am. Thank you. Any other doubt? Ranjit sir? Yeah, ma'am. I don't have any doubt. So we can as I am attending all subject training, hopefully maybe next year I am ready to take all the subject classes. Anyway, it's a wonderful and interactive session, ma'am. The more teachers are interacted with in between also. Every learning experience will be a happy hour for us. We are considering every evening, 7 o'clock to 8 o'clock or 8:30. This 1 hour, 1.5 hours is a happy learning hour for the Council of CBSE Schools of Kerala and Central Sahodia School Conclave. We all are in a hectic schedule, and we all are in a different assignments and duties performing day by day. But 7 o'clock, once we are thinking of that 7 o'clock, nowadays, the stakeholders of CBSEs are always with us for one or another subject enrichment program. So today, secondary Hindi, it's an outstanding learning experience, a wonderful session. Thank you very much. Thank you very much. Be a part of our team. Leda ma'am, we are sincerely thanking you on behalf of Central Sahodia School Conclave and Council of CBSE Schools of Kerala. Thank you very much, ma'am. It's an effective and wonderful session. Our technical team, INSETI, special thanks and regards, and all the participants, special thanks and regards. Officially, the meeting is ending now. We will write back tomorrow 7 p.m. with another subject, another resource person. Thank you all. Thank you very much. Thank you, Ranjit sir, and I thank all the teachers who have attended, because I know today is Wednesday and they were all in the school till 4 o'clock, 5 o'clock, and I sincerely thank all the teachers who have joined the session. Thank you, Thank teachers. you, ma'am. Thank you, sir.